महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले केआरएस, जेडीयू, डीएसएस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर शुरू की तहरीक मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ बेंगलोर से शुरू हुआ आंदोलन। जी हां, 16 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिस्ट में वेलफेयर पार्टी ऑफ कर्नाटक की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर सतह की मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया। इस इजलास में कोलकाता से आए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नायब सदर डॉक्टर रईसुद्दीन ने शिरकत की। डब्ल्यूपीआई कर्नाटक के नुमाइंदों के साथ जेडीयू, केआरएस, आरपीआई, डीएसएस के नुमाइंदों ने खिताब किया। तमाम ने एक आवाज में मरकजी और रियासती हुकूमतों को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और खुले लफ्जों में कहा कि इख्तिदार में बैठी पार्टियां या तो अवाम के मसाइल हल करें या फिर इख्तिदार छोड़ दें, वरना आने वाले इंतखाबात में लोग जरूर बजरूर सबक सिखाएंगे। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है। पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल का 35 रुपीज टैक्स है और 38 रुपीज टैक्स है और स्टेट का 25 रुपये टैक्स है। या अगर पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हर अनाज के ऊपर वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा। गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है और मालदार जो है मालदार बनते जा रहा है और कई करोड़ रुपए यहाँ से बैंक से भी पैसे लूटे गए और उसके वजह से ये बात हुई कि दूध पर टैक्स डालना पड़ा, अनाज पर टैक्स डालना पड़ा और जो दवाइयां हैं उस पर टैक्स डालना पड़ा और इतना महंगा हो गया है कि टैक्स कोई आदमी गरीब जाके कोई चीज खरीद नहीं सकता है। ये गरीबी को यहाँ से मिटाना है और उसी तरह यहाँ जो भी पढ़े लिखे को भी कोई जॉब नहीं है और छोटे छोटे जो भी कारोबार है पूरा वो खत्म हो गए हैं। गरीब गरीब तर होते जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का सहारा बने, वो गरीबों को फ्री इंटरेस्ट लोन की कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ आ जाए और गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से होना है। ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣ, ಹಣ, ಹೆಂಡ, ಜಾತಿ, ಕೋಮು ಇಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂತಹವರು ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಆಗಿದೆ। ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ, ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರಾಗ್ತಿರೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೋವು ಅಳಲು ಏನು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನು, ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಡಿಪಾಟಲು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2023 ಮತ್ತು 2024 ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಹನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು WPI ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನ, ಯೋಗ್ಯರನ್ನ, ಅರ್ಹರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಖಂಡಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಮಾಜಿ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು
ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರನಾಗಿನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಲ್ಲ, ಇದಾಗಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇದೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. आज का वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वो प्राइस क्या राइज हो गए हैं ना, इसलिए मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में वो 2014 से पहले 2012-2013 पेट्रोल रेट 35-40 रुपीस, now is 110, गैस इज 350, now is 1100. बट ये वो क्या आदमी सोचा, मोदी आने के बाद में देश का बहुत इम्प्रूव हो गया, बहुत बदलाव हो गया, वो बोल रहे ना, कुछ भी नहीं हो गया. इसलिए मैं आज वेलफेयर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड कृष्णा रेड्डी का कर्नाटक राष्ट्र समिति पार्टी एंड JDU एंड ऑल पार्टी से मिलके वो क्या प्राइस है, प्राइस का डाउन करना, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्राइस का एक चल रहा है, वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं करने तो बहुत मुश्किल हो जाती. इसलिए मैं सभी आदमी का बात किया, नहीं आपका सबका साथ में, सबका एक ही प्लेटफॉर्म में वो जॉइंट प्रोग्राम करने का 2023 एंड 2024 में वो क्या वो इलेक्शन से एक कोमुवादी है ना, या कम्युनल फोर्सेस है, ये कम्युनल फोर्सेस का वो करप्टेड पॉलिटिशियंस का निकालना असेंबली का, पार्लियामेंट का. इसलिए मैं आपको सबका साथ में बैठ के अभी सोच रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन के साथ में जाके सबके साथ में जाके वो ये क्लीन करना, ये आदमी क्या क्या है, वो भ्रष्टाचार में वो चोर का काम करता ना, ये सभी आदमी का घर का ये पार्लियामेंट असेंबली से निकालना, ये काम करने का आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया साथ में चलेंगे, वो साथ में चल के इलेक्शन भी करेंगे. I think in the name of GST, we've been having a lot of issues. There's no clarity on any of the new policies that's been got by the government of the BJP. So we're trying to figure out. I don't know if you could recall, like last month, Bangalore had heavy rains, right? The entire structure was been at a nil. There was a pause of lifestyle, right from food to transport to work. And in this who all worked was the IT was really disappointed, and most of the companies have relocated. But the ones who had the miseries were the real classes, where they had to travel a lot about. So I'm talking about the real low classes people, where they had to work, where they had no funds, and they were not even given the transports to go. So where was the government? What were they doing? I don't think they were answerable for any of these questions that was being asked, right? And there was quite a lot of debts that happened. And to the end, I think the entire system was completely shut down for any queries that was being raised by a general public. And today the topic today was about the unemployment, very true. And there was an issue also being raised that the top people that's been the high class studies, which is of the PhD holders also, have to look for the least paid jobs. So if this is the situation, I do remember the BJP making a lot of promises during the elections that they're going to look at a new government. So where's the new government? It's not about standing at the New York Square and talking and, you know, encouraging the people overseas to say that yes, we are doing a lot of great job, but we are still over here, the people, we the general people here, they're answerable to us, and quite a lot of questions that's never been answered. And the whole channel is just so busy with their own commitments, which makes no sense to general people like us. You've been charging us with a lot of tax. What happens? You know, GST tax, and you have 10 taxes being paid by every individual. I do remember if he has to come with me for coffee, he pays the GST, and how is he going to claim it? What is his role of paying the GST?
You hold GST for the people who are working class, makes sense. You have business, makes sense. Why a layman has to pay GST? What is he going to do? डॉक्टर रईसुद्दीन मेरा नाम है और मैं कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से आया हूँ और इस जलसे में मैं शिरकत किया। ये एक नेशनल लेवल का एक कैंपेन चल रहा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, उसका एक जलसा ये है। तो उसी में मैं उस मौजू पर कुछ इजहार ख्याल के लिए यहाँ पहुँचे और मेरा मैसेज ये है कि जब तक इकोनॉमिकल सिस्टम में तब्दीली नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक ये जो इस्तेसाल है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन है, ये रोका नहीं जा सकता। जैसे कि हमारा ये तयशुदा बात है, जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लॉयटिंग है और वो पूरा दुनिया को एक्सप्लॉयट करता है। ये एक मानी सबको मालूम है। और हमारा मुल्क अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सू होके उस इकोनॉमिकल सिस्टम को एग्जीक्यूट करना और उन लोगों से मदद लेना, इकोनॉमिकली उन लोगों का इताअत करना, ये सब शुरू कर दिया शुरू से। और अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन, फ्रांस और मुख्तलिफ ममालिक है कि एक ग्रुप है इस इकोनॉमिकल सिस्टम का, जो बुर्जुआ इकोनॉमिकल सिस्टम जो पूरा दुनिया में उन लोगों ने कायम करके रखा, उसी को ये पैरवी कर रहे हैं। और इसका साथ साथ वो इक्वालिटी, वो माशी इक्वालिटी हो या आपका ये माशरती इक्वालिटी हो, ये इक्वालिटी बरकरार रहना चाहिए। आज हालत इस तरह है कि पूरा मुल्क आज एक फोर्स, एक पावर में बैठ के ये पूरा मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये सब लोग मानने के लिए तैयार है जे जब से ये रेजिम पावर में आया पूरा मुल्क को तोड़ने का काम ज़्यादा किया। अब यहाँ का जो बाशिंदे हैं सब कल्चरल ग्रुप को अलग अलग बांटने का कोशिश कर रहे हैं और रिजनली भी लोगों को बांटने को कोशिश किया और वो लोग सपोर्ट किया रीजनलिज्म को, लिंग्विज्म को, रीजनलिज्म को, कम्युनलिज्म को साथ दे रहे हैं। तो इस वजह से ये मुल्क का जो इंटीग्रिटी है, ये मुल्क का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, प्रोग्रेस है, ये सब कुछ मुतासिर हो रहा है। इसलिए वो इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम सबको मिलजुल के एक दूसरे का खैर का होके पूरा मुल्क को मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये कर्नाटक स्टेट में हमारा जो कैंपेन शुरू करे हैं हम 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज के खिलाफ जो हमने कैंपेन शुरू किया, उसका ये लॉन्चिंग फंक्शन था बेंगलुरु में आज इस इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर हॉल में। इसका मकसद ये है कि हम हमारी इस हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं, उसका ध्यान इसकी तरफ लाना चाहते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, जीना वबाल हो चुका है, तो इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए और उसका फ़र्ज उनको याद दिलाने के लिए ये जो है अभियान शुरू किया है। मगर इसके साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है 15 दिन में, वो ये कि जन जागृति जाथा एक बस हम अरेंज करके एक बाकायदा यात्रा की शक्ल में गुलबर्गा से लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उडुपी से लेकर आखिर में मंगलूर डिस्ट्रिक्ट को ये पहुंच रही। वहाँ हर एक सिटी में हम वहाँ पब्लिक रैली करेंगे, पब्लिक फंक्शन करके लोगों को समझाएंगे इन चीज़ों के बारे में जो हुकूमत की कमजोरियाँ हैं। साथ साथ है बीडी नाट का जो है वो भी एक आर्ट के जरिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को पब्लिक फंक्शन के जरिए हम अलग अलग उनको जो है ये रैली इसके जरिए कर रहे हैं। दूसरा साथ साथ कर्नाटका में वेलफेयर पार्टी हमारी, इसके साथ जेडीयू और फिर उसके बाद में केआरएस कर्नाटक राष्ट्र समिति जो रविकिशन रेड्डी साहब की, ये तीनों मिलकर एक हम लोग बाकायदा एक अलायंस किए हुए हैं और हम अगले इलेक्शन पे साथ में लड़ने की बात हुई है। अभी आरपीआई के सदर डॉक्टर मोहन राजू ने भी
कहा कि उनका एक 7 पार्टियों का एक गठबंधन, उनका एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। उसमें सीपी, सीपीएमएल है, रेड स्टार है, आरपीए है, बहुत सारे पार्टी साथ हैं। वो 7 पार्टियों का एक ग्रुप और साथ में ये हमारे 3 पार्टियों का एक ग्रुप, टोटल मिलाकर 10 रीजनल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म अब बन रहा है। तो अभी शेप ले रहा है और इससे उम्मीद है कि आगे चल के कर्नाटक में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में सियासी हालात पर इसका तबसरा, इस पर इसका असर पड़ेगा, पॉलिटिकल मैप चेंज होगा, यहाँ का एक इनकलाब आने वाला है। ये हमारी इंशा है, मंशा है, ये हम चाहते हैं कि ये आगे ले जाएं लोगों को और ये होकर के रहेगा। नाइंसाफी कुछ दिन चलेगी, जुल्म कुछ दिन चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। अब ये जुल्म खत्म होने वाला है, नाइंसाफी खत्म वाली है और हुकूमतें बदलने वाले हैं। विधानसभा और पार्लियामेंट को अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे और अगले कुछ सालों में यह इनकलाब हिंदुस्तान में आने वाला है। ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರಿಗೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಇದು 3ನೇ ಕಾರಣ. 4ನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವರಿಗೆ 2% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ 33 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 33 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನು ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳುಂಟು, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 50% ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನುಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಲಿಯನರಿಗಳಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.